Assalamualaikum, welcome back to Seco's lecture on radioactivity. The next topic that we're going to discuss is natural radioactivity. इसके अंदर हम तीन पार्टिकल डिस्कस करेंगे, अल्फा, बीटा और गामा पार्टिकल्स. ये डिस्कस करने से पहले हम आइसोटोप्स को डिस्कस करते हैं. सो आइसोटोप्स, हमने न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की बात की. आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट that have same proton number but a different nucleon number. और वो इसलिए डिफरेंट होते हैं बिकॉज दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. एग्जांपल हमारे पास क्लोरीन की आ जाती है, हाइड्रोजन और ड्यूट्रियम की आ जाती है, जिसके अंदर द नंबर ऑफ प्रोटॉन और सेम विद द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम. इसी वजह से दीज आइसोटोप्स आर रेडियोएक्टिव बिकॉज दे आर हाईली अनस्टेबल. सो आइडिया ये है कि सम न्यूक्लियसेस आर हाईली अनस्टेबल and this tends to happen when the nucleons are not balanced. Or in order to become more stable, they emit particles, and the particles that they emit are in the form of electromagnetic radiation. ठीक है, और ये emit क्यों करते हैं जी? To become more stable. So to start with, they're not very stable, and they emit particles, also referred to as radiation, to become more stable. This radiation can be in the form of three particles, which are alpha, alpha, beta, and gamma particles. So पहले हम start करेंगे alpha particles से. Alpha particles are, this is how we denote them. Alpha particles are helium nuclei, high energy particles with 2 neutrons and 2 protons, and they are emitted when the nuclei are too large. Alpha particles की decay equation हम अब बाद में इकट्ठे discuss करेंगे along with beta particles. Next up is beta particles. Beta particles are basically high energy electrons emitted from the nucleus. High energy electrons during beta decay, emitted during beta decay. And this is a symbol that we use, -1, beta minus. बीटा जो होता है वो वेरी मॉडरेटली आयनाइजिंग होता है. आयनाइजिंग का मतलब होता है ये ऐसी रेडिएशन जो कि एयर पार्टिकल्स को आयनाइज कर दे, और इट हैज़ अ चार्ज ऑफ 1e minus. Or also remember that alpha particles are highly penetrating, and not highly penetrating, and beta particles are very moderately penetrating. और इनकी जो रेंज होती है in air is around 22 centimeters to 3 meter depending on their energy. And if we want to stop a beta particles, we would need a few millimeters of aluminum foil. Next up are gamma rays. Particles नहीं कहेंगे because they are electromagnetic rays. Gamma rays. Gamma rays are very high energy electromagnetic waves, or electromagnetic waves, and they're emitted by nuclei that need to lose some energy. Secondly, gamma can ionize atoms, and if they ever come into contact with living cells, they can end up killing them.
दिस इज वाई गामा के लिए हमें बहुत प्रोटेक्शन चाहिए होती है, एंड वी यूज लेड to stop it from penetrating. Let's see how they react in a charged plate. So if you had a charged plate and हमारे पास particles alpha, beta और gamma है, तो how would they react? होगा यूं कि alpha particles would bend towards the negative plate because it's positively charged. Beta particle would show less deviation, they would go towards the positive plates, and because gamma rays are neutral, they would pass straight through the plate. So iske baad, let's look at what the decay equations. For example, if a radioactive particle is decaying by alpha decay or beta decay, तो वो जो change in proton or electron or neutron numbers आएगा वो कैसा होगा? Let's first discuss alpha decay. So in the case of alpha decay, a large unstable nuclei with too many protons decays to release alpha particles, releasing different nuclei. The result, the isotope will change into a different element, or this can be represented like this, A, Z. जब ये डिके करेगा तो ऑब्वियसली दो न्यूट्रॉन जो डॉटर होगा उससे दो न्यूट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे होंगे, प्रोड्यूसिंग एन अल्फा पार्टिकल. एग्जाम्पल में अगर हमारे पास पोलोनियम है with this nucleon number and proton number, and if ये अल्फा डिके के प्रोसेस के थ्रू जाता है तो the parent nuclei would lose 4 nucleons and 2 protons. Second up is beta decay, beta negative decay. एक बीटा पॉजिटिव डिके भी होता है लेकिन वो हमारे सिलेबस में फिलहाल नहीं है. तो जब बीटा डिके होता है, the number of proton increases by 1 and the total number of nucleons stays the same. ये जनरली इसलिए होता है, सेम क्यों रहता है, बिकॉज न्यूट्रॉन टर्न्स इनटू अ प्रोटॉन, बट अगेन वो हायर लेवल पर आते हैं और कभी हमें उसके लिए डिस्कस करने की जरूरत नहीं है. सो लेट्स जस्ट लुक एट एन एग्जांपल. एक्स को ही ले लेते हैं, एक एलिमेंट एक्स, और इसका बीटा डिके होता है तो न्यूक्लियन नंबर सेम रहता है, आप याद रखिए, और प्रोटॉन नंबर 1 से इंक्रीज होता है. यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिलीजिंग अ बीटा पार्टिकल. एंटी न्यूट्रिनो भी होता है लेकिन वो अभी जानने की ज़रूरत नहीं है. फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैड कार्बन, और ये नाइट्रोजन बन सकता है with 7 protons releasing a beta particle. So that's it for today's video. अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाफ लाइफ, बैकग्राउंड रेडिएशन और फ्यूजन फिशन को.